Today's our topic is formation of NaOH. Formation of NaOH. How we will obtain NaOH with the help of NaCl. One of the most important answer of this lesson. And this process is also known as chlor-alkali process. This process is also known as chlor-alkali process. So let us try to draw how we'll try to obtain NaOH. Okay, so from here the solution, brine solution of NaCl, brine solution of NaCl, that is sodium chloride. Brine solution means aqueous solution. It is known as aqueous solution of NaCl is called brine. Aqueous solution of NaCl is, उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन कहते हैं. सही है. सो दे विल एंटर फ्रॉम हियर NaCl aqueous solution. Okay, we'll take one anode, we'll take one cathode, we'll connect them between a battery, we'll try to separate them. Okay, this is a diagram, okay, that is given in your textbook, that how can we obtain. Here it will exit brine NaOH. Brine NaOH. Brine means it is an aqueous solution. Okay, now we have taken NaCl and we have taken water, so they will dissociate when electricity is passed through it. They will dissociate in NaCl, Na plus and Cl minus, and H plus and OH minus. Okay, so positive, you write here positive ion. Okay, and you write here negative, because they are going to attract toward opposite electrode. प्लस वाले माइनस वाले की ओर अट्रैक्ट करेंगे, माइनस वाले प्लस वाले की ओर अट्रैक्ट करेंगे. ओके, ऐसे. नाउ दिस Na plus and OH minus, they combine to form NaOH. They combine to form NaOH. They will react with each other and form NaOH. These also can react to form HCl, but we don't need them. These two will combine to form NaOH. And this hydrogen will be removed from, this is positive charge, that is cation. It will attract toward negative electrode, and this is negative electrode. It will attract toward positive electrode. So here we will get chlorine gas, here we will get hydrogen gas, and here we will get NaOH. Okay, so why this process is known as chlor-alkali. मैंने तुमको बोला था कि ये प्रोसेस का नाम chlor-alkali क्यों है. तो NaOH एक अल्काली है, NaOH एक अल्काली है, और क्लोरीन बनता है. दूसरा क्या बनता है, क्लोरीन बनता है. तो ये क्लोरीन बनता है और ये एक अल्काली है, इसलिए ये प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर-अल्काली. इसलिए ये प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर-अल्काली प्रोसेस. यू नीड टू रिमेंबर दैट, यू नीड टू राइट डाउन यूजेस ऑफ ऑल दिस रिएक्शन. ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे यूज होते हैं. दिस इज यूज इन डिग्रीजिंग ऑफ मेटल. मेटल के डिग्रीजिंग में ये इस्तेमाल होता है. हाइड्रोजन, इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल, इट इज यूज्ड एज ए मैर्गारिन. मैर्गारिन मीन्स ए लो क्वालिटी ऑफ बटर, ए लो क्वालिटी ऑफ बटर. इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल, इट इज यूज्ड एज ए मैर्गारिन. क्लोरीन, क्लोरीन इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, पानी को साफ करने के लिए स्विमिंग पूल में. और हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. सो all these three substances which we obtain here are very useful. So use the application or uses of all these two are molecule, while this is an compound, is very important.